Students, welcome to MGM education. We see now what is federal state. संघीय राष्ट्र कहले कौन बुझ देखो. This is very important political science paper 2 for +2 hours and useful for the students who are preparing for competitive examinations also in +3. Yeah. A federal state is said to be that state where there are dual government, means two government, one central government, another state government. Take the case of India, central government, right? Government of India, Narendra Modi. And state government, government of Odisha, government of Andhra or government of Gujarat, you can say this. Right? So, Navin Patnaik government of Odisha. Gote sarkar, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଦୁଇଟି ସରକାର ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏକ ଦୁଇଟି ସରକାର, ଦୁଇ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ। So 2 points you have to remember here. One is dual government, one central government, state government. Second is your distribution of power. So here powers are distributed between central and state government. So that's called a federal state. Or maximum countries today are federal state. India, USA. Remember, USA is the oldest federal state in the world. Right? The opposite of federal is called unitary. संघीय राष्ट्र विपरीत राष्ट्र को ऐकिक राष्ट्र बोली कहबे पिला माने सिठी केवल देखो ऐकिक राष्ट्र आ गोटे मु कहि दोछि ऐकिक राष्ट्र राइट वेयर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट मींस इंग्लिश रे कहबे यूनिटरी स्टेट कोन कहबे यूनिटरी स्टेट वेयर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट आ अन्य गवर्नमेंट नथिबो एंड नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इट इज द टाइप पॉइंट इट इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्षमतार बंटन हो नथि आर उल्टाटा होछि इटा कोन फेडरल रे टू गवर्नमेंट राइट आ कोन सेकंड कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अच्छा पिला माने टू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थिले फेडरल बा संघीय राष्ट्र एक सरकार सिंगल गवर्नमेंट नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हेले ऐकिक राष्ट्र सो आम ये कौन पढ़ले ऐकिक राष्ट्र कौन संघीय राष्ट्र कौन आम ए जानीगले ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एग्जांपल यूनिटरी रो एग्जांपल होची इंग्लैंड आउ ओल्डेस्ट यूनिटरी स्टेट वर्ल्ड रो कोटा बोले भी इंग्लैंड इटा मन रखितो परीक्षा रे पढ़ता होची थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।